Verse number 242. Shall we read? First 247. 247. You may read this verse. एकविंशतियुतं शतद्वयं यद्गुणं गणकपञ्चषष्टियुग पञ्चवर्जितशतद्वयोद्धृतं शुद्धिमेति गणकं वदाश्रुतं गुणकं शुद्धमेति गुणकं वदाश्रुतं यद्गुणं गणक यद्गुणं गणक correct. Now English translation. Say quickly, mathematician, what that multiplier is by which 221 being multiplied and 65 added to the product, the sum divided by 195 becomes exhausted. Now, write the equation. Write the equation 221x is equal to 221x plus 65. 221x plus 65 is equal to 195. Why? 221x plus 65 is equal to 195. 195 y. उसके नीचे ax plus c is equal to by. Ax plus c is equal to by. Now what are the values of a, c and d? A is equal to 221, c is equal to 65 and b is equal to 195. Now we call 221 as bhajya, dividend, bhajya. 221 as bhajya, 65 as kshepa, that is additive, and 195 as divisor. 195 as divisor, that is bhajaka. On the right part, y is equal to ax plus c by b. Now I think this terminology is quite clear. What we are doing? We are dividing by b. So divisor is b, bhajaka is b. We are dividing ax. So a is called as bhajya. We are adding c. Therefore it is kshepaka or kshepa or additive or another terminology also used. So these terms we have to keep in mind while analyzing the Kuttaka. We solve the problems of this type in 4 steps. The first step. Have you note down the terminology? First step. Observe the numbers 195 and 221. Are there any common factors? Among these two numbers? 13. So divide by that common factor.
and reduce the equation. 195 and 221 are the two numbers. Take out the common factor from 195 and 221. Equation was first 221x plus 65 is equal to 195y. Divide the whole equation by 30. Divide the whole equation by 30. It will be 17x plus 5 is equal to 15y. So this is the first step. Next step. Next step, carry out the procedure. 17 by 15. By 15. So 17 by 15. 17 भाज्य है, 15 जो है ना भाज्य का है. The quotient opted is 1. 15. Remainder is 2. Now take 15 as the bhajya. Quotient will be 7. Remainder will be 1. This is HC of method of division. This is HC of method of division. In the first step, what we have done? What is solution of an equation? What is meant by solution of an equation? Finding the values of x and y which are concurrent with the given equation. That means if you substitute the values of x and y in the given equation, it must hold good. Then only those are called as the solutions of the equations. Now since there are two variables, suppose x plus y is equal to 25. X plus y is equal to 25, x minus y is equal to 10, x minus y is equal to 10. What is the value of x and y? Five. X minus y is equal to 5. You take x minus y is equal to 5. X is equal to 15, y is equal to 10. In each, how many equations are there? There are two equations. How many unknowns are there? Two unknowns. So if there are two equations and two unknowns, if we know number of equations is equal to number of unknowns, then solution of such equations together is called as Samakalina Samikarana or Ekakalina Samikarana, simultaneous equations. So the values of x and y are unique here. X and y are unique. The equation doesn't hold good for other values of x and y. Now repeat. Now in our given equation, how many unknowns are there? There are two unknowns. Given equation is only one. So such equations are called as indeterminate equations. Why we use the term indeterminate means there is no unique value for x and y. There are unlimited number. There are infinite values of x and y which satisfies this equation. Therefore, we call such equations as indeterminate equations. Now our problem is to find the general solution. First, we should find a solution with least solution, that is solution having least values of x and y. Then adding some multiples, we will obtain the other solutions. Depending on the multiple,
there will be infinite number of solutions. Now, in the first step, what we have carried out? We have divided by 13. That means we have taken common factor out. The number 13 divides 221 and also 195 and 65. If there is a number which divides A and B but not C, there are three coefficients A, C and B. If a number divides only A and B, not C, we will not get solution of such equation in integers. If you want solution in integers, if a number divides A and B, then it should divide C also. So first of all, in the first step, make A and B relatively prime by taking out any common factor if there is. Now, in this case, 221 and 195, they have common factor 13. So, when we divide by 13, we will obtain 15 and 7. 15 and 7 are relatively prime. 15 and 7 are relatively prime. 15 is a divisional number, 17 is a prime. But 15 and 17 are relatively prime. ಒಂದರಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಭಾಗ ಹೋಗಬಾರದು ನಿಶ್ಚೇಷವಾಗಿ. That is called as relatively prime. After obtaining the relative prime numbers, first put the bhajya. Here what is the bhajya? Instead of 221, 17 will be the bhajya. What is the bhajaka? 15 will be the bhajaka. That we call it as upbraided bhajya and bhajaka. The term apavartita, in Hindi we say apavartita. In English, upbraided, that is shortened, divided by a common factor, are called as, in English, upbraided, in Hindi, apavartita. We have find out the apavartana of A and B, that is 13. So, we are dividing 17 by 15 in the HCF method of division. We have obtained two quotients, 1 and 7 in order. This is second step over. First step, we have to upgrade the A and B, that is bhajya and bhajya. Second step, carry out the division in the HCF method. Now, this method is a sophisticated one or a refined one. The first method for Puttaka solution is stated by Aryabhatta the first. 5वीं सदी में आर्यभट्ट ने कुट्टक को कैसा सॉल्व करना बताए हैं. बाद में जो ना वो रिफाइन होते हुए भास्कर ने उसको इजी किया है. Now we are studying the method stated by Bhaskara in his Lilavati and Bijaganita. Now first we have completed two steps, that is upgrading the bhajya and bhajaka. Next we have carried out the HCF division. We have obtained two quotients. Then third step. Third step is Valli Rachana. Third step is Valli Rachana. अब यहाँ पर हम क्या करना है? Write down the quotient obtained in their order. So, we have obtained two coefficients, 1 and 7. Write one Rachana, correct. First one, below it 7. Below it, write the C. What is C here in the updated equation? In the original equation it was 65. In the updated equation it is 5. So write 5 below the last quotient. That is quotient where we obtain 1 as the remainder. लास्ट क्वेश्चन क्या रहेगा? 1 जो ना लास्ट रिमाइंडर 1 जब मिलता है उस वक्त जो क्वेश्चन आता है उसके नीचे जो ना वी हैव टू राइट C, उसके नीचे 0. एक फर्स्ट कॉलम एक लाइन ड्रा करो.
Next, what you have to do is in the और एक column और एक column. Now write dash against 0. इसके सामने एक कॉलम में डैश लिख दो. Next, write 5 as it is. Write 5 as it is. Then multiply 7 by 5. Multiply 7 by 5. Multiply 7 by 5. No. Like that only. 7 into 5. 7 into 5 plus 0. वो कॉलम को बड़ा कर दो, चौड़ा कर दो. 0 इज इक्वल यहीं नीचे लिखो और आप और एक कॉलम को और आप चौड़ा कीजिए और एक ही लाइन में लिखिए. 35. नेक्स्ट, राइट 1 एज इट इज. दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ वल्ली रचना. व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू टेक आउट द कोशंट्स इन देयर ऑर्डर. बिलो द लास्ट कोशंट राइट डाउन द क्षेपका. Below it 0. Perform the operation, that is antya. This is antya. उपांत्य. उपांत से उपांत्य ऊर्ध्व. एक अंत्य हो गया, एक उपांत्य है. उसका ऊर्ध्व, उपांत्य ऊर्ध्व को उपांत से मल्टीप्लाई किए और उसमें अंत्य जोड़ दिए. ये टर्म क्या है? तो वर्ष जो है ना, वाइल ट्रांसलेटिंग फर्स्ट दीज टर्म्स आर रिक्वायर्ड. उपांत्य ऊर्ध्व को उपांत से मल्टीप्लाई करके उसमें अंत्य ऐड करना चाहिए. फॉर द नेक्स्ट कॉलम वो रब कर दो. और 5 के सामने एक डैश डाल दो. अब हमको ये अंत्य है, ये उपांत्य है, ये उपांत्यार्ध है, ये उपांत्य ऊर्ध्व है. क्या करना है? व्हाट इज द प्रोसेस? 35 into 5 नो, उपांत्य ऊर्ध्व को 1 उपांत्य से उपांत्य ऊर्ध्व को मल्टीप्लाई करना है. 1 into 35 plus 5. No, you should keep 35 as it is. These two are dash, so first you take 35 as it is. 1 into 35 plus 5. वो क्या हुआ? Is equal to 40. अब हमारा वल्ली रचना क्रिया खत्म हुआ. वल्ली रचना क्रिया कब खत्म होता है बोले तो in the last column there should be only 2 numbers. When we attain only 2 numbers in the last column, then Valli Rachana is completed. So we have completed 3 steps. In the first step, the given equation is upgraded. In the second step, what we have done? We have carried out the division by HCF method. In the third step, we have वल्ली रचना किए थे. तीसरा स्टेप खत्म हो गया. अब लास्ट स्टेप. वहां पर 17 क्या है लिखो और 50 क्या है ऊपर. 17 क्या है? उसका नाम. व्हाट इज 17? नहीं, टर्म यूज्ड. 17 जो है ना भाज्य है. और 15 क्या है? हाँ, नीचे वाला जो है 35, नीचे को जो है ना भाजक से भाग देना. The below term in the last column should be divided by bhajaka. भाजक से भाग दे.
साइन यूज करो 35 डिवाइडेड बाय और ये यहाँ पर एक लाइन ड्रा करो नीचे में, दैट इज ओनली। हाँ, अब क्या करना है उस तरफ तो करना। हाँ, 35 डिवाइड बाय 15, what is the remainder? What is the remainder? 5 is the remainder. What is the quotient? 2 is the quotient. So 35 can be written as 15 into 2 plus 5. 35 is equal to 15 into 2 52 plus 5. Likewise, अब हमने पहले क्या किया, नीचे वाला जो नंबर है उसको भाजक से भाज दिया। अब ऊपर वाले नंबर को भाज्य से भागा करेंगे। ऊपर वाला नंबर क्या है 40 को किस से भाग देना, भाज्य से, अपग्रेडेड भाज्य। 40 मीन्स 17 into 2 plus 6। यहां पर जो कोशंट आ जाता है 15 into 2 plus 5, 17 into 2 plus 6, the quotient should be one and the same. We have to divide in such a way that the quotient should be one and the same. If not, suppose this is 60, उसको 60 करो। Suppose it is 60, it is not 60, but suppose it is 60. Then what you have to do? 17 into 2 plus 17 into 2 plus कितना 26। ऐसा लेना चाहिए। ये कोशेंट जो है ना एक ही रहना चाहिए, तभी जो है ना आंसर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। कौन सा? नहीं वही। अब if in case this was instead of 40, if it was 60, अब 17 गुने 3 51, you should not take the quotient as 3. That point I am clearing it. This quotient should be one and the same. This is the only aspect you have to remember. So अब हमको least solution आ गया। So x क्या है? x को हम गुणक कहते हैं। x टर्म x 2 था ना, x को हम गुणक कहते हैं, y को भागलब्ध और फलक कहते हैं। गुणक इज इक्वल टू x, भागलब्ध इज इक्वल टू y। The least value is what we get for x is equal to 5। यहाँ पर x is equal to 5, y is equal to 6। x is equal to 5, y is equal to 6 are the least values of x and y. Next, x is equal to, अब लिखिए x is equal to 5 plus 15t, y is equal to 6 plus 17t। गुणक को लीस्ट वैल्यू ऑफ गुणक को हम 15 क्या है, भाजक को एक नंबर इष्ट संख्या से गुणा कर उसमें ऐड किए तो और एक सॉल्यूशन आता है। देन y को क्या करना, लीस्ट सॉल्यूशन जो है उसमें जो है ना भाज्य से जो t है वही t से भाज्य को गुणा करना, ऐड करना। डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ t you will obtain infinite solutions. So this solution is called as the general solution and this is the least solution. मालूम हुआ? So और एक बार मैं रिपीट करता हूँ। There are only 4 steps. First step is to upgrade the equation, that is
divide by the common factor. That is the first thing. Next step is to carry out the division in the HCF method. Third is Valli Rachana. Valli Rachana में लास्ट कॉलम में 2 ही संख्या होना चाहिए और नीचे वाले का जो है ना भाजक से भाग देना और ऊपर वाला भाज्य से भाग देना और कोशेंट एक ही रहना. जो रिमाइंडर और शेष आएगा वो जो है ना लीस्ट वैल्यू ऑफ द x and y. Then लीस्ट वैल्यू ऑफ x plus multiply the bhajaka by t, you will get general value of x. Similarly, if y is equal to 6 plus 17, that is bhajya into t, the same t you have to take. It will be another set of solutions. So, depending on the value of t, you will get infinite number of solutions. So, one then t is independent variable. Any इष्ट संख्या, any positive number you take, any positive number you take. This is all about Kutta. Kutta का जो है ना बहुत हार्ड है ऐसा कहते थे. आपको कैसा लगा? Whether it is very hard? No, it is not hard. That's why you should not teach the students it is hard topic. It is not so. How you teach is important. Next, the other verses are only special cases what shortcut you have to adopt. कुट्टक में जो है ना इतना ही, the concept of कुट्टक is this much. बाकी का श्लोक क्या कहते हैं? अगर this is the case, then the procedure or working procedure will be shortened. वो shortcut है. वो shortcut क्या है? अगर this is the case, so he takes case one by one. Such 5 cases are dealt with. They are only shortcuts of the process. ये process कैसा sharp होगा वही बताए. अगर main idea or main concept of the Kutka is this much. अब वो हम जाएंगे वर्स को. This has been stated in 5 verses. अद्योहारक्षेपकश्चापवत्यकेनाप्यादौ संभवे कुट्टकार्थम् येन छिन्नो भाज्यहारो न तेन क्षेपः. बस हाँ, भाज्यो हारः क्षेपकश्चा अपवर्त्यः केनाप्यादौ संभवे कुट्टकार्थम् येन छिन्नो भाज्यहारो. भाज्यहार भाजक और भाज्य, उसको भाजक को हार भी कहते हैं. येन छिन्नो भाज्यहारो न तेन क्षेप. That is, if a number, if a and b are divisible by a number and c is not divisible, तद दुष्टम उद्दिष्टम एव, वो जो है ना ठीक नहीं रहेगा. वो that means we will not obtain the solution in integers. Next, our second verse number 43. परस्परं भाजितयोर्ययोर्यशेषस्तयो स्यादपवर्तनं सह येनापवर्तेन विभाजितौ योतो भाज्यारो दृढसंज्ञकौ स्तः. ये क्या है? दृढ़ संज्ञा. In this verse, carrying out the division by HCF process. वो क्या है? ये श्लोक में है. नेक्स्ट, मिथो भजेत्तौ दृढभाज्यहारौ यावत् विभाज्ये भवतीह रूपम्. यावत् भजेत् भवतीह रूपम्. That the remainder should be 1. Up to that you have to carry out the work. Okay, next. फलान्यधोधस्तधो निवेश्य क्षेपस्ततः शून्यमुपान्तिनेन. एक के नीचे फल जो आता है, that is quotients. एक के नीचे एक रखते जाना. उसके बाद अधो अधर तदो निवेश्य क्षेपस्ततः. After the last quotient you should place the क्षेप. शून्यम उपान्तिमेन. शून्य जो है अंतिम में उपान्तिम. और नेक्स्ट, स्वर्ण
ततः शून्यम, वो उसमें शून्य रखो। नेक्स्ट जो ना नेक्स्ट उपांतिमेन, और नेक्स्ट शुरू कर जाता है उपांतिमेन स्व ऊर्ध्वे, उपांत ऊर्ध्व। मैं जो टर्म दिया हूं उपांत ऊर्ध्व वहां पर नहीं है, स्व ऊर्ध्व है। उपांत का ऊर्ध्व जो उपांत ऊर्ध्व हम फाइंड करेंगे उसमें क्या है, इज इट करेक्ट और नॉट? हाँ, उपांत के ऊर्ध्व पर जो है उपांत के ऊर्ध्व, बस। Then that term is to be corrected by the Sanskrit scholars. I have called it as upant urdhva. हते अंतेन युते, अंतेन युते, जो नीचे था उसको हम जोड़ देंगे। तदंत्यम, that will be the last term for the next column. That will be the last term for the next column. त्यजेन मुहु, वो एक था पहले का छोड़ दिए, डैश डाले ना, मुहु, that is पुनः 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 उसको छोड़ते जाना। उसको छोड़ते गए तो ही लास्ट में दो ही आता है ना। हाँ, कहाँ पर आए हम? मोह स्यादिति राशि युग्मम, दो ही आता है। राशि युग्मम। हाँ, उसके बाद ऊर्ध्वो विभज्येन दृढ़ेन तष्टः, द अपग्रेडेड भाज्यका, अपग्रेडेड भाज्य तष्टः, दिस कोशंट, तष्टः फलम गुणः, the word tashta used for this quotient, ये one and the same रहना, उसके वास्ते वो तष्टा फलम गुणः स्याद् अधरो अरेण एवं, जरा ऊपर तदैवात्र यदा समस्ताः स्युर, पढ़ो इसको। एवं तदैवात्र यदा समस्ताः स्युर्लब्धयश्चेदभिषमास्तदानीं यथा गतौ लब्धगुणौ विशोध्यौ स्वतक्षणाच्छे चमितौ भूतौ सः। और एक बात यहाँ पर ध्यान रखने का क्या है, in the HCF division we have obtained only 2 quotients, so number of quotients is even number. When there is even number of quotients, the remainder itself are the least values. Suppose if the number of quotients obtained are odd, then what you have to do? If the number of quotients obtained are odd, you have to deduct this remainder from the bhajya, and this from the one from the, here we are using 15, that means 5 should be divided by 15, and so also in the other case. वो एक पॉइंट है, अगर वो जो है ना, instead of even number of quotients, if there are odd number of quotients, that should be deducted by the upgrader. अपग्रेडर जो है ना, अपग्रेडर से उसको निकाल दे तो आ जाएगा, बस। यहाँ पर जो है ना पुट तक खत्म होगा। Now any questions? When we say least solution, now these are both are possible solutions. Yeah. Suppose we get a negative number. No, consider only position now. Okay. For the time being. The least means numerically least. Not considering their sign. ऐसा least means numerically least. ठीक है, clear. So the last part, can you repeat once more? If it is odd, what should we do? Make that 5 and By Vinay, hi. Take another example. 100x plus 90 is equal to 63y. 100x plus 90 is equal to 63y. You carry out yourself solution. आप कहाँ रुकेंगे मैं बाद में बताऊंगा क्या करना है।
हाँ, वो छोड़ दो, दूसरा एग्जांपल ले लो। हाँ, वो एग्जांपल 60x plus 16 is equal to 13y. ये एग्जांपल ले लो। That is in verse number 251. 60x plus 16 is equal to 13y. So 16 or 60x plus 16 is equal to 13y. इसको सॉल्व करो। हाँ, सॉल्व करो, आप सॉल्व करो। Don't get confused. That's why first given thing you have to write. Given bhajya or in English dividend. भाजका क्या है और क्षेप क्या है, क्या क्या करना है एक के बाद एक। Now 60x plus 16 is equal to 13y. Here what is the bhajya? You are doing the work. Carry on. Odd numbers. 4, 1, 1, 1. So they are odd numbers. That's why I have taken this example. In case of odd numbers, first draw the table. Vertical axis, horizontal axis. No. This you have left. Write 16 as it is. Then carry out. This is 1 into 16 plus 0. 16. Okay. Next. Write 2 dashes here also. 16. 32. Next. The same as above. Next. So, every one of them have copied or worked out yourself? Working out. Today.
So whatever done on the board is correct. Now all of you got that? बल्ली रचना खत्म हो गया. X is equal to plus 80 into 4, that is 320 plus 48. We are doing this now. 80 into 48 into 1 plus 32. Into 1 we are doing 48 multiplied by 1 plus 32. या नीचे का जो गुणक के लिए किससे भाग करना है? नीचे का नंबर कौन सा इससे भाज्य करना है? बाय डिवाइड बाय. और आप गलत लिखे हैं वहां पर. दैट इज भाज्य इज 60. ये जो है ना भाज्य है, ये जो है ना भाज्य का है. भाज्य नहीं और गलत है. हाँ भाज्य, हाँ करेक्ट. भाज्य को ऊपर लिखो. Why we have to write down भाज्य ऊपर? भाज्य जो है ना 60. भाज्य What you are dividing is भाज्य नहीं और एक बात भी है उसमें. भाज्य का जो है ना 13. He has written earlier भाज्य को ऊपर लिखे थे, भाज्य को नीचे लिखे थे. मैं जो है ना उसको चेंज किया. क्यों चेंज किया? हाँ वो एक बात है. और नीचे का जो है उसको भाजक से भाग देना है. ऊपर की संख्या को भाज्य से भाग देना है. ओके, सो अब हम एक फॉलो करते हुए जो है ना डेफिनेट करना, उसमें कुछ कंफ्यूजन नहीं आएगा. सो डिवाइड 80 बाय 13. सो राइट इट एज मॉड. वो मॉड इनको मालूम नहीं है, उस वास्ते वैसा लिखना. हाँ 80 इज इक्वल टू 13 into 6 plus 2. 13 into 6 plus 2. Is it okay? Likewise, write 368. ऊपर 368 is equal to 368 is equal to क्या लिखना? 60 into 6 plus 28 plus 8. ठीक है? हाँ. यहां तक सबको समझ में आया? नीचे वाले नंबर को भाजक से भाग देना, ऊपर वाले नंबर को भाज्य से भाग देना. भागाकार प्रोसेस में कोशंट एक ही रहना चाहिए. यहाँ पर कोशंट जो है ना 6 है, एक ही है, so it is all right. Now the remainders obtained are 8 and 2. So the remainders obtained will be the least solutions if the number of quotients obtained were even. एक HCF मेथड में जो है ना एक क्वोशंट जो आए हैं उसका नंबर कितना है? 1 2 3 4 5 है. 5 जो है ना आड नंबर है. अगर वो सम संख्या रहे तो चलता था. ये जो है ना विषम संख्या आया, तो अब क्या करना? बोले तो जो ऑपरेटर है उसमें से वो रिमाइंडर को निकाल देना.
हो गया। अब जो है ना वो जो आया है वो लिस्ट सोल्यूशन, दैट इज x is equal to how much? x is equal to 11 and y is equal to 52. समझ में आया? या x is equal to, नीचे का जो है ना x, ऊपर का जो है ना y। हाँ, अब बच्चे बहुत कंफ्यूज करते रहते हैं while teaching coordinate geometry। ये x एक्सिस ये है क्या, ये एक्सिस एक है, उसको बता देना। जब बच्चा पैदा होता है वो कैसा रहेगा? सोए रहेगा। जब 1 साल का बनेगा तब जो है ना वो खड़ा रहेगा। तो पहले जो है ना सुलाने का है, बाद में खड़े करने का है। सो फर्स्ट व्हेन यू कंसीडर जो है ना ऑर्डर्ड पेयर्स, फर्स्ट जो है ना सुला देना, बाद में खड़े करना, बस इतना ही है। बहुत इजी है, उसमें कुछ भी कंफ्यूजन नहीं। हाँ नहीं अभी हाँ। अब x एंड y का वैल्यू आ गया और इसको माइनस कर दें, प्लस को माइनस कर दें। हाँ, इफ द क्षेपका इज नेगेटिव, ऋणात्मक क्षेपक रहे तो क्या करना? ये एक प्रॉब्लम आया। पहले क्या प्रॉब्लम आया था? इफ द नंबर ऑफ क्वोशंट्स वेर ऑड, क्या करना? उसको तो सॉल्व कर दिए। अब ऋणात्मक क्षेपक रहे तो क्या करना? फिर वही प्रोसेस करना। तो वही प्रोसेस करे बोले तो क्या हो जाता है? We obtain the original numbers, बस उतना ही। सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। एक बार सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, क्यों कर रहे थे? वो ऑड नंबर्स है, उस वास्ते ऑड नंबर भी है और नेगेटिव भी है, तो सब्ट्रैक्ट नहीं करना, खत्म। टू नेगेटिव मेक्स अफर्मेटिव। हाँ, वो एज इट इज रख दे तो हो गया, खत्म। So put का completed in every respect now. So mostly विनय विल पे बहुत खुश हो गया होगा। पुट का लेना है सर, पुट का लेना है, पुट का ले लेंगे, ठीक है। पुट का एप्लीकेशन, पुट का एप्लीकेशन जो है ना ज्योतिष शास्त्र में व्हाइल कैलकुलेटिंग द एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन जो है ना, हाँ अब समझ लीजिए कैसा सेकंड, मिनट, आवर, दिन को जो है ना अहरगण करते हैं, और मास और वर्ष के बाद क्या है? भगण काल। एक रेवोल्यूशन को क्या लेना है? एक रहे तो दूसरा कैसा मालूम करना। इसमें जो है ना कुट का एप्लीकेशन है। कुट का जरूरी है, अगर कुट का नहीं रहे तो प्रोसीड नहीं हो सकता है एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन। If you want to know these things, you start from Bhaskara first, Mahasiddhanta. Not Mahasiddhanta. No. Mahabhaskariya. Mahabhaskariya, 4th chapter, 17th to 19th verse. उसके बाद जो है ना लघु भास्करिया, उसके बाद सिद्धांत शेखर, उसके बाद जो है ना भास्कराचार्य, उसके बाद नारायण पंडिता, उसके बाद जो है ना माधवा, नीलकंठा एंड शंकराचार्य। ठीक है, बाद में विनय, उसके बाद मुरली कृष्णा, बाद में अरुण, ऐसा। So it is in your hand
how to make the subject easier. First you should analyze what is the problem. How many steps can be found? मैं एक ही वक्त जो है ना वो पांचों वर्ष को एनालाइज करते गए तो क्या था? I myself would have been confused. So take an example. Solve it step by step. उसके बाद में मैं स्टडी कैसा किया हूँ, पहले जो है ना एग्जाम्पल लिया, उसको सॉल्व करते वक्त स्टेप्स नोट डाउन करे, उसके बाद में जो है ना कमेंट्रीज में क्या क्या लिखा है, फिर जो है ना ओरिजिनल वर्स कहाँ पर कट करना, वो मुझे समास और संधि मालूम नहीं है, वो यहाँ पर कट कर दो बस। हाँ, तो ओरिजिनल वर्स को यहाँ से एक स्टेप, यहाँ से दूसरा स्टेप, यहाँ से तीसरा स्टेप, 4 स्टेप खत्म हो गए, we obtained the answer. That's it. Polarization. The same term is being used here also. Actually, this method is not there in. और एक बात, ये modern methods जो है, यही मॉडर्न मेथड्स के साथ जब कंपेयर करते हैं, फॉर एग्जांपल इफ वी कंपेयर चक्रवाला भास्कराचार्य विद दैट ऑफ लेब्निज, नॉट ऑफ लेब्निज, लैग्रांजा का जो मेथड है ये जो है ना फर्स्ट डिग्री का है, ऐसा ही अगर सेकंड डिग्री टी शर्ट ऑफ विनय 61x² + 1 = y², उसका जो नाम है वर्ग प्रकृति, कॉमन टर्म, इसको जैसा कुटक कहते हैं उसको जो है ना वर्ग प्रकृति कहते हैं। वर्ग प्रकृति का एक मेथड जो है ना चक्रवाला विधान, वो चक्रवाला विधान से 61x² + 1 = y² का प्रॉब्लम सिर्फ 4 स्टेप में आएगा। लैग्रांजे का मेथड यूज करें तो 21 स्टेप्स होना चाहिए। आंसर में कितना बड़ा डिजिट नंबर है? हाँ, आंसर भी बहुत बड़ा डिजिट है। सो वी हैव टू अप्रिशिएट द ब्यूटी ऑफ द वर्सेस एंड आल्सो द मेथड यूज्ड ऑफ द ग्रेट स्कॉलर्स। ये जो ना वैसा जो है ना आधुनिक और प्राचीन दोनों को कंपेयर करना, इन व्हाट एस्पेक्ट इट इज सुपीरियर। In the modern, but because they were the rulers, so who have prevented you to add this in the syllabus? It is only prejudice that one is secularism, another जो है ना टीचर्स नहीं जानते, ये वो टेक्स्ट बुक कंप्लाइन कमेटी ये सब जो है ना विकास होता है उस रास्ते में। ठीक है, ओके।